नमस्कार, मैं आपकी अपनी होस्ट शैली अरोरा आज शक्ति स्पीक्स पे दोबारा एक नई शक्ति के साथ मिसेस अमृत पुरकुल प्रोजेक्ट की फाउंडर। Hello, my name is Amrit Barrett. I'm the founder of Project Purkul. It's lovely to be here at Shakti Speaks. Stay tuned to keep watching new Shaktis at this channel. Hello and welcome to Shakti Speaks. I'm your host for today, Shelly, and let's welcome Mrs. Amrit, founder of Project Purkul. She's here with us as a new Shakti on Shakti Speaks. Hello, ma'am, how are you? All well, lovely to be here. We are so happy that you are here with us at Shakti Speaks. Thank you so much. Ma'am, we know so much, we have heard a lot about Project Purkul. But behind that is Mrs. Amrit. We want to know something about your life, your journey. Well, my journey before Project Purkul has been a long one, and yeah, from where I come, uh, this is where Project Purkul. I landed in Project Purkul was very different. This was a very new thing for me, and I took it and I learned from the people that I'm working with today, and they trained me to help them. Okay. So that was it. I come from Shillong, Okay. which is also a same part of the Himalayan region. yes. I'm a Pahadi girl, let's Oh, say, yeah. coming from that part to this part. And I've been into production, I have been into education, I've been worked into hospitality thing. So kept saying yes, 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 and I landed up in Project Purkul now. Okay. Yeah. So, your all experience, like you said you have been in education, hospitality, then production. Yeah. Did play a role in the Project Purkul? Absolutely. Yes. So, because all those experiences that I had with the various other works that I was involved with has now actually is now being used in this. Okay. So it's I mean, like, when I'm working with them to understand them and to showcase or to show them, which way to move and all those aspects are being So I would say Mrs. Amrit is a guiding light in the Project Purkul. well, we both are guiding each other. Definitely, This there's phase, always yeah, give and take, yeah, but there absolutely. has to be a torch bearer. Yeah, So, can you also know more about the Project Purkul? How it incepted, how it took birth, and how you got into this. That was a very overall picture that you came into the Project Purkul, you started working on. But how it started and what is it is about? So if we talk about Project Purkul is basically we work with the textile waste. Let's Okay, say okay. it's a textile based handicraft. Okay. Where we are emphasizing more on reducing textile waste, which is supposed to be the worst waste on planet. Yes, It's yes. worse than everybody talks about plastic. Yeah. But not knowing that what we wearing also is plastic. Yes. But this is fashion. The fast fashion has created so much of waste. So keeping that, it's a conscious move. Okay. Now, how did Project Purkul happen? During the COVID, when everything was shutting, that's the time we actually took birth. The Project Purkul took birth. And this was a result of a lot of women who were left unemployed because of one unit at that place that moved out, decided to move out. Okay. So it was an overnight thing, and then I was in touch with the women out in that area, doing some awareness programs and Okay. things like this. And then they said कि मैम हमारे पास में ये स्किल है एंड हमें ये आता है करना, पर हमें ये नहीं पता कि इसको आगे कैसे लेके जाएं. सो एट दैट पॉइंट मेरे को कुछ नहीं पता था कि क्या होगा, हाउ आर वी गोइंग टू मूव, एंड ये कपड़ा के साथ क्या करते हैं. आई वॉज एज इग्नोरेंट एज एनीवन जो कपड़े के मामले में लाइक वो. बट देन स्लोली सर लेट्स गिव इट अ ट्राई. वैसे भी सब कुछ बंद है यहाँ पे, कुछ वो नहीं है, कुछ तो करना ही है. सो वी स्टार्टेड. घर घर जाके हमने काम दिया
and there were two ladies who were with me who were actually the inspiration, you know. उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया है टू कर। मैंने कहा मेरे को नहीं आता, बोलते मैम हमें आता है, आप फिगर मत करो, you know. वी डिडंट नो कि फंड कहाँ से आएगा, वो होगा, तो यू नो आई लेफ्ट माय जॉब, तो उसमें से जो पीएफ वगैरह आया था उसको लगा दिया हमने, यू नो। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, देख सब लगा रहे हैं, हम मरने नहीं देंगे। दैट वाज अ जॉइन एफर्ट। एंड देन हम वी वेंट, जब थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन मिलता होता था ना, घर घर जाके काम दे के आते थे, एंड देन वी यूज्ड टू कलेक्ट एंड ऑल दैट थिंग वाज हैपनिंग। देन व्हेन द कोविड बीच में he relaxed for some time, that's the time I realized कि यार it's a lovely work they have got, they already got the skill, and which is so good thanks to the previous unit, they actually have trained them very well. But if nothing happens, ये तो खत्म हो जाएगा, Exactly. मर जाएगा, you know. Another skill, finishing, you know. So we, with that whole thing, and we kept employment and क्या बोलते हैं, empowerment at the center of this. Okay. And then we started this project. We had around about 200 ladies at that Working point. under that roof. Yeah, in that. So you mean to say, like, Project Purkul is focusing on two major aspects: employment and empowerment. So can you define the two different sections? Because normally we talk about women empowerment, women employment. How Purkul project is functioning in a different way to these two subjects? Okay. So when we are talking about empowerment for us is not just कि घर में पैसा आ गया. That lady who starts earning, you know, she has to understand her responsibility as a person in the society that she is placing, you know, as a mother, as a daughter, as a you know, human being, you know, that number one. Number two, the thing is this dying skill needs to be kept, you know. उसको ना, तो instead of teaching them new skills, we try and discover, or we try and see के which skills are available in that area, and then we harness a small program which will generate income and make a group and help them Working on that same same method. So that becomes an empowerment, you know, because anything that they know they have their heart in is sustainable. Actually, you know, yes. something you teach from outside, they don't know the know-how's there. Yes. They'll always be looking at you, क्या इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, you know. So obviously the moment you move out, it collapses, you know. So that the other thing is कि empowerment, the youth needs empowerment, they're looking for jobs, everything, you know. But what is happening is they're moving out from the villages going to cities. कि now it's not there, वो बात भी सही है, because it's only shown कि नीचे जाओगे city में तो ही job है, otherwise there are no jobs, you know. So we try and build a business module around that, where the ladies who are able to work with the skill to produce a particular product will do that. Now everybody has got phone and all, you know, whole day वो सब लगे रहते हैं उस पे, तो उसको photographs करना, उसको social media वगैरह ना, we don't discourage them to put it सीधा, but at least they can start working on that marketing Section and they are then, you know, given buddies in the city. Like we have got youngsters in the city, so उनको उनके साथ में Attach तो you know the bridging हो जाती है कि they know अच्छा our skill is also being used, तो वो empowerment वहाँ हो गई. The males in the house, you know, वहाँ पे if they want, they can help us in, you know, taking the stuff to the market, bringing it, कुछ चाहिए and all, you know. So that itself becomes a very self-sustainable unit, showing each one both. And there are places they are staying. We discourage units coming to one place, you know, everybody traveling and coming and then, you know, going, the skill khatam ho gayi. Exactly. You know. So you're working more on the life skill development, and making them, you know, work throughout, you know, their life. It's and in a connected way. In a connected way. Yeah. So you know, and then they should see that each one's effort is required. It's a team effort. Recognition. Yeah. So वो हो गया हमारा empowerment के में भी, you know, but employment, instead of giving, because
how much can you employ? Yes. How many people can you employ? You have to create situations where employment is seen within that, Yes, and absolutely. then business can grow within that. Where what is lacking is their connection with the, where अभी product बन गया, सब हो गया, अब उसको बेचना है, they don't know where to. So there is where we need to show them, Yeah. कि sell them. Online बेच लो, ये कर लो, वो कर लो. For some time it works. Now there is flood of products Yes, there. absolutely. So their chance of selling that product is like 1 out of 100. या हो भी गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो वो है ना. How much can they push and all? So उनको अलग aspects like physically कहाँ बेचना है, क्या करना है, और instead of opening 5 brands, let's do a collaborative moves have to be done. So वो हो जाता है कि you make, let ये लेबल लगाते हैं, इनको देते हैं, और तो वो लेबलिंग करना, ये करना, वो करना, creating those opportunities. Correct. Bringing them, opening their minds. So that is what we are doing. There is where the employment is coming. Employment is what we define employment in a general space कि ठीक है, यहाँ कर रहे हैं, सैलरी पगार मिल रही है, या ये बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं, but you have to show them opportunities so they start thinking on their feet. As it says that magic is everywhere, so employment is also everywhere. It's Everywhere. just that you have to find, discover it. You choose Yes. whether you want to be employed or you don't. Yeah. There is nothing. और अगर बैठ के पत्थर भी तोड़ के जमा करने लग जाओगे, वो भी बेचने के लिए हो जाता है. So it's mindset. तो वो because they are not trained to think in that manner. Even I started thinking in this manner after so many years of working and उसका, तो how can we expect कि ये overnight वो कर लें? So you have to start talking to them, showing them and all. And trust me, they are very fast in grasping. कोई दिखाए तो सही, बताए तो सही, So that is what we try to do, कि they tell us कि ये हमारे पास हो गया, इसको कैसे बेचना है बताओ. Then we should इधर इधर करना है, ये करना, So वो है. So मैम, अभी तक जो आपने मुझे पुरकुल प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मुझे ये समझ आया कि दैट यू एंड योर टीम इज वर्किंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ईच फैमिली इन दैट विलेज. So like are you working on the psychological aspect and emotional aspect also when you talk about the holistic development? Yes, all these things actually, if you single out someone and you start working on that person, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. साइकोलॉजिकल भी हो जाता है, डिस्फंक्शनल भी हो जाता है, ईगो भी आ जाती हैं, उसमें सब कुछ हो जाता है. बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग, उसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपने उसको कर लिया, आपने सारा फोकस उस पर कर दिया, तो नेचुरली अदर स्टार्ट फीलिंग, कुछ ना कुछ फील करते हैं, है ना. सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क with the entire family, so that उनका जो एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है, should be maintained. Yes. They should value each other's work. तो वो जैसे पहले होता था, लेडीज किचन में काम कर रही हैं बिकॉज उसमें से कोई पैसा नहीं आ रहा है, it's taken anything that doesn't bring in the money aspect, that energy money वाला, तो is considered to be useless. Yes. Now उसको हटा के they having a servant doing it, उसके लिए पैसे दे रहे हैं. Exactly. So slowly these kind of things have to be told and shown, and each one's effort is good. So क्या होता है जब when the lady in the family is working and उसका कुछ पैसा आ रहा है, husband is seeing that वैल्यू आ रही है उसकी, बट एट द सेम टाइम अगर वो कर रही है, कहीं ना कहीं से तो टाइम उसका गया, तो हस्बैंड नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो टाइम निकल रहा है तभी कर पा रही है. What I am doing also is bringing money, but I'm only focusing on bringing. But she's taking care of my घर बार and everything. Yes, and all. true. The child, we keep on saying तेरे को काम करना चाहिए, ये करो, वो करो, but उसको seeing is learning. 90% of your learning comes from seeing, Yes, ना? yes. तो उसको घर में जब दिखता है कि माँ बाप दोनों मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत से कमा रहे हैं पैसे, and then he is doing what he is doing. ऑटोमेटिकली एक दूसरे का शाम को बैठ के खाना खाएंगे, डिस्कशन में उनका अलग हो जाता है. The dynamics that start changing. So it's productive discussion at Exactly. home. Despite they don't come from an educated family, they're understanding what is the production. This is the only positive. way of, Yes.
So just focusing on women empowerment, उसको लेके जाके बना दिया बड़ा, ये कर दिया वो कर दिया, and then that you know I have literally seen कि जो औरतें ये सोचने लग जाती हैं अब तो मैं कमा रही हूँ, you know मैं कमा रही हूँ and all, and then वो घर में टाइम उसका वो हो जाता है, you know, and then उनकी husband wife की लड़ाई शुरू हो जाती है, अच्छा तू कमाती है अभी, ये कर रही, you know that kind of a thing, you know क्या सोच रही है, वो भी अपने आप को दिखाने, the children what are they saying, frictions देख रहे हैं ना, so we have to, that's why all our work जो है कि अगर ये घर का काम कर रहे हैं वो भी काम है, इट्स इम्पोर्टेंट, अगर वो ये नहीं करेगी तो कौन करेगा, उसके बावजूद उसका टाइम है, प्लीज टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेजमेंट, कि यू डोंट हैव टू गो टू गेट लकड़ी एंड ऑल, तुम्हारे घर में गैस है, फ्रिज है, सब कुछ है, एवरी विलेज हैज गॉट दैट, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है ना, बहुत ही पिछड़े विलेज होंगे जिसमें कुछ नहीं होगा, अभी हर एक जगह दे आर कंफर्टेबल, उस किस्म की बात नहीं है, यू नो, सो व्हाट आर यू डूइंग विद दैट एक्स्ट्रा टाइम, तुम्हारी दादी वादी तो लगी रहती थी, करती रहती थी, उनके पास ये था, नाउ तो चेंज हो गया है, तो व्हाट आर यू डूइंग, सो उस टाइम में इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारे पास बैंक में पैसा है कि नहीं है और समथिंग, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी यूजफुल, यू नो, काम करो, make yourself useful to your family first and community, automatically होता है, ताकि खाली वो बाहर जाके बैठ के you know गप्पे मारनी, ये करना वो करना, productive करो. So it's actually helping them to understand their potential. Absolutely. And breaking the barricades of not being literate, hence living a productive life. Absolutely. Yeah. So till the time I don't value myself, Yeah. why would you value me? True. You know, you'll only value something that is valuable. Yes. Like if I only, मैं बिचारी, मैं अबला, मैं ये, तो वर्ल्ड तो वही बनाएगा ना, तो यू से नो आई कैन ऑल्सो वर्क, मैंने ये जो झट से काम खत्म किया, मैंने ये बैठा एंड आई जो 2 घंटे में था ये किया था, बच्चों को भी स्कूल में देखा है, खाना भी, because that is important, the family is important, you know, उसी के आसपास सब वो हो रहा है, so my husband should get टाइम पे खाना, मेरे हस्बैंड को भी बोलूंगी आते हुए ले, तब देन शी कैन स्पीक ऑल्सो कि व्हेन यू आर कमिंग ब्रिंग दिस, यू नो, या तुम ये क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन कर सकेगी, लेकिन वो अगर नहीं बोल रही, वो चुप करके अपने आप को दबा रही है, वो कर रही है, तो वो खुद ही नहीं बोलेगी, है ना, तो वो दैट थिंग, दैट इज व्हाई वी से कि पहले when you're working, it's not work, it's your make yourself valuable, then you'll see everybody संभाल के रखेंगे तुम्हें, पैसा को भी संभाल के रखते हैं ना कि वो वैल्यूएबल है, बिल्कुल. So that is the concept of Purukul project. Exactly. So ma'am, we have actually had an insight about Purukul project from you, क्योंकि दूर से और अंदर से समझने में बहुत फर्क होता है. We want to know something about your life more, like, you know, कभी ऐसा महसूस हुआ कि अब everything is finished and you took your charge and you rose, first thing. Second is कि Purukul project करते कोई challenges जो आपने face करी हो and how you overcome, you know, you overcame all that. If I look at my personal life, what I am today is all because of those challenges. You know, क्योंकि अगर challenges नहीं होते तो शायद I won't be even outdoing what I'm doing. You know, क्योंकि difficult situations ही आपको बताती हैं कि आपके potential क्या है. You know, when we face with that. So I came from a small place. मतलब हम लोग जब अभी तो खैर मेघालय and Shillong is making news, like बहुत वो हो गया है. तो my challenge was at every place. पहले तो when I came to Delhi, उधर लोगों को समझना was a challenge. You know, हर कोई कुछ बोल रहा है, कर रहा कुछ है, सोच रहा कुछ है. Everything about them is कुछ. हमें समझ में नहीं आता था कि you know how am I think, but I wanted to do something in my life. You know कि हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये करना है, वो करना. So everything I did was you know, because when you are simple, तो लोग सोचते हैं ये बहुत चालू है, because you're doing it straight. उनको समझ नहीं आती थी, मुझे उनकी नहीं आती थी, but eventually होता था. और तो और मेरी हिंदी, you know, like
आई वाज लाइक क्या खाएगा कहाँ जाएगा, यू नो दैट Okay. काइंड ऑफ वो खरीदी था, तो वो उधर बोलते थे, दे वुड स्टार्ट लाफिंग एट मी. हाँ. सो एज सिंपल एज दैट, उसको करेक्शन करना, चलना, अपनी जगह बनाए रखना इन अ मेट्रो सिटी, बीइंग अ गर्ल उधर. those days Delhi used to be very safe, I have to say. अभी की सिचुएशन है, more challenges for anyone today to be there than हमारे टाइम में. तो वो चैलेंजेस थे. फिर जॉब्स ढूंढनी करना, तो देवर टाइम्स के जहाँ पे जितना हमें पैसे मिलते थे उतने में मंथली गुजारा भी नहीं गुजारा होता नहीं था, होता था, हाँ. यू नो. तो लैंडलॉर्ड खटखटाता रहता था, हम बंद करके अंदर बैठ जाते थे कि यार शाम को जब सैलरी लेके आएंगे तब उसको तब फेस देंगे. करेंगे. वो भी अपने चैलेंजेस थे. Yes. एंड शर्त ये थी, घर में अगर बात करेंगे, बोलेंगे कि दिस 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 इज व्हाट वी आर फेसिंग, मतलब छोड़ के आ जाओ, हाँ. तुम्हें घर में सब कुछ मिल रहा है, तो वो भी नहीं कर वो भी सकते नहीं थे. कर सकते. तो यू नो दैट वाज लाइक वेरी वो. सो खुद वहां बताते सबको ठीक चल रहा है, सब ठीक रहा है, इधर हो रहा था, रोते भी थे, सब कुछ करते थे. 1,000 रुपए में पूरा महीना चलाते थे हम. You can't even imagine a day here. Exactly. Today. Now my daughter will spend 1,000 rupees बगैर सोचे समझे. Yeah. You know. So that was it. But that taught me how to budget myself, how to move around, be independent. अपने आप को कैसे गार्ड करके चलना है, लोगों को कैसे समझना है, intentions कैसे समझनी है. जो आजकल हमें गुड टच बैड टच सिखाते हैं हम लोग को, वो सब Naturally आ सिचुएशंस जाता. में आई थी. So, you know, हमारे गार्ड्स और ये सब एंटीनर्स तब खड़े हो Active. गए थे, एक्टिव. किसको कैसे एड्रेस करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं. सो दैट वाज लर्निंग. वहाँ से हमारी तो प्रैक्टिकल बुक थी वो, है ना. Correct. तो वहाँ से देन मूविंग, बी ऑलवेज, आई वाज अ यस पर्सन, बिकॉज मेरे में वो हंगर था सीखने का. मेरे को हम खाली स्कूल पास किया था, एंड दैट स्कूल वाज हमारा खाली 12th तक. अभी हो गया, हम तो 10th तक पढ़े थे, यू नो. देन इट वाज यूनिवर्सिटी. तो वहाँ से आए, तो सोचो स्कूल से सीधा हम लोग वी वर थ्रोन इनटू दिस, फिर कॉलेज, ये वो एंड ऑल, यू नो. सो ये सारा था. एंड देन whatever came my way, I started doing. करते करते हर चीज़ से मैंने एक्सपीरियंस लिया. इवन मैंने मॉडलिंग किया, तो उससे भी मेरे को कैमरे के आगे कैसे क्या होता है, कैसे होता है. मेकअप, एक दिन मेकअप मैन नहीं मिला, तो हम लोग खुद ही मेकअप शुरू कर दिया, एंड आई लर्न. फिर मैंने मेकअप सीखा, तो वो मेकअप का आया, तो अभी वो हो गया. देन कोई मूवी मिली, उसमें भी कर लिया. मैं शाम को पूरा दिन काम करते थे, शाम को फ्री होता था, तो हम लोगों ने रेस्टोरेंट्स में भी काम किया, यू नो. तो बट हम लोग को ये था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, करते रहो, यू नो. तो हॉस्पिटैलिटी में, एडवर्टाइजिंग में, फिर बिहाइंड द बिफोर द कैमरा, फिर प्रोडक्शन यूनिट किया, सब करके स्कूल में. व्हेन आई रीच्ड हियर देहरादून में, दैट वाज चैलेंजिंग. आई वाज अ सिंगल पेरेंट एट दैट पॉइंट. माय सन वाज इन द बोर्डिंग यहाँ पे. Okay. तो suddenly he was growing up. Yeah. You know, it was a big decision के यार, या तो वो suddenly एक आदमी मेरे सामने होगा, I won't know him, वो. And that is one time कि I started everything all over again, left everything in Delhi and फिर से Scratch से. शुरू किया. choices बना करनी पड़ती है ना Yes. लाइफ में. तो my choice was my family, my child. Child. तो फिर यहाँ से दोबारा से शुरू किया, not knowing the place, you know. फिर कहाँ hospitality, advertising, वो सब, and I started working in a school, did a counseling course, ये वो, you know. So I started enjoying. Yeah. I started enjoying my work, and by this time ऐसे नहीं लगता था कि कोई चीज चैलेंज आ गया, ये आ गया, तो होता था yes, something new करते हैं, चलो, you know, वो. So वो सब हो So गया. that was a positive attitude It's throughout. keeping yourself positive is so important. Yes. And everything that happens उसमें opportunities ढूंढो, Yes. you know, not हाय अब क्या होगा, Yeah. क्या होगा, जो करोगे वही होगा यार, you know, Yes, that. absolutely. So this was my personal life का challenge. And trust me, I'm blessed कि because I kept my this thing positive. I've got a wonderful husband, lovely daughter now, and a beautiful family. You know, it's result of that. Yes, I'm very sure. Yeah. You know, it says your right intention will attract the right, you know, reward. Absolutely. So that's what you have been doing. You have been very positive. Now, when we look at your present situation, you have been contributing back to the society at a very higher level. So that in you know,
the energy or the universe is supposed to also pay back in the right way. Absolutely. So as you said that you have a lovely family and a daughter and son, Yeah. so that's a result of good deeds. Yeah. Yeah. Then now coming to Project Purkul. Project Purkul took birth from a challenge. You know, कि COVID है, सब बंद है, अब कैसे वो करें? itself was a challenge, you know. Yeah. So this challenge, hats off to the artisans, you know, the Yeah. workers who said कि हमें आता है, आज वो करेंगे, you know. So they're inspired. But yeah, जब हमने शुरू किया इनिशियली ठीक है चला, देन कोविड बंद दोबारा से, द सेकंड वेव दैट केम इन, वी हैड लॉट ऑफ लॉसेस बिकॉज उस टाइम में पीपल इन द फर्स्ट Yeah. रिलैक्सेशन पीपल थॉट खत्म हो खत्म हो गया, गया। है ना, तो खत्म हो गया एंड एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग नॉर्मली, बट नोबडी एक्सपेक्टेड कि सेकंड भी होगा। आएगा। जब सेकंड आया तो एवरीबडी गॉट वेरी कॉन्शियस कि ये बचा के रखो, यू डोंट नो क्या होने वाला है। ये सब की जरूरत नहीं है, डोंट हाँ, शॉप, यू नो। हाँ। Yeah, the life was more Yeah. important, health was more And important absolutely. those time. And because we didn't have any funding, we never took any funds and all, तो जितना हमारे पास था वो लगा दिया था, तो you know this was a Yes, again a challenge, you know. yeah, and everything was on rent and all. Yeah. And वो मकान मालिक तो ये नहीं बोलता ना कि अब कोविड चल रहा है तो पैसे नहीं आ रहे तो ठीक है ये महीने का किराया मत दो, उसको तो ही इज मोर रिलैक्स, खुले या ना बने मेरे को तो मेरे पैसे आ Rent रहे आएगा हैं, ही दैट्स द आएगा। एटीट्यूड, यू नो। बहुत Yeah, कम yeah. होते जो सेंसिटिव हो, यू नो। सो वो उनको सस्टेन करके रखना, उसको वो करना, बीच में तो ऐसा आ गया था। एंड देन I had youth who's left Delhi and ये सब, and they came and started working, you know, With you. with me. Now उनको भी sustain करके रखना, and most of them were not being paid कि हम इसको पहले चलाएंगे. This like was a startup for them, you know. So we were like, I was the only eldest उनके बीच में. They all were young people, 25-26 साल वाले, you know, who उनको देखना था, and they कि इसको चलाएंगे, इसको करेंगे, and then we'll start. But अगर ऐसी सिचुएशन चलेगी तो when will they start earning, Yes. you know? So that was, and nobody, lot of promises from, you know, different people who would walk in, you know, We'll do this, we'll do that. ये करते हैं, हम तुम्हें ये फंड देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। और मैंने पहले सोचा कि यार ये ना अगर ऐसे हेल्प मिलेगी तो वी कैन डू, बहुत अच्छा कर लेंगे हम लोग। एंड चिल्ड्रन ऑल्सो गॉट बोर्ड बिकॉज वी वेरी इनएक्सपीरियंस इन दिस वर्स पे। बट पता चला कि दे वर ओनली देयर टू क्रिएट अपना सिचुएशन, पिक्चर्स लेके उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर दिया। वी वर लेफ्ट देयर ओनली। So lot of time was wasted in you know, trying to understand all that, you know. It's not a very easy thing, and हाँ, if there are funds are a huge problem. अगर तो है तब तो बहुत बड़ी बात है, नहीं है and then if you are actually taking funds and it's never sustainable. So we also realize कि अगर हम पैसा लेके किसी का चलाते हैं, या चाहे फ्री में हो या जो भी हो, but the moment that thing is finished it will collapse. So we made it a point कि no donations, no funding, no nothing, इसको हम लोग वैसे चलाएंगे. So then to pump in that energy, pump in वो and understanding बनाना कि देखो, listen, your work is very important, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसकी मार्केट में वैल्यू है, show them that वो, and उसी से पैसे हैं, तो sell your वो, don't sell your freedom, you know. Correct. Don't become a slave to that. Yes. So वो था, that was a challenge itself, you know. So but yeah, 3 साल तक तो, then my brother told me, he said कि listen, if you have done something, 3 साल भूल जा, that's a lock-in period. Yes. कि तेरे को कोई फायदा होगा. True. Very true. And we are not exactly in the profit side, but we know कि we are sustainable, you know. We are doing very well. हम लोगों ने अच्छा अपना market बनाई, and people know us. Pan India, we are getting orders, you know. And today the biggest achievement is that every woman in my group is a resource person on its own standing. Very nice. They know right from कैसे बनाना है to कैसे बेचना है, कितने का क्या चीज आती है, total transparency है. So that transparency actually helps me
to be more independent and do other things that are Vice into versa way. also for them, you know, as an individual to be more independent. हाँ जी. Yeah, both ways. It's a lovely project. And although it is very easy to say that, you know, ki we are at this height, but when people see that green grass is green on the other side, Absolutely. but it is very difficult, I can understand. And with all, you know, the difficulties of your personal life, then rising up again, managing your child, then not managing one child, I think you have taken a whole community too as your children, you know. You're raising them also. So that's a wonderful contribution, ma'am. And we really look forward to having such strong female personalities contributing back to the society, and making it more happy and harmonious life for everyone. Thank you so much. And this is actually if we talk about women empowerment, I think this is the kind of empowerment that we all need to do, you know, Yes. as many as we can. It's a rub effect, you know. Yes. Contagious banao isko. Correct. Ma'am, since you are here with us at Shakti Speaks, we want you to give one message to all the women community from your side as a Shakti. My one message to all the Shaktis out there from this Shakti platform is try and make yourself important. अपनी जो importance है उसको feel करना, and जो भी आपके साथ में है, आपके आस पास है, उसको equally importance दो. We all are Shakti. शक्ति अकेले अपने आप में कुछ नहीं है, वो सबके साथ मिल के ही शक्ति बनती है. So that's my message for you all there. Thank you so much for having me at this podcast. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखे, या बहुत सारे जो दूसरे अच्छे बने हुए हैं शक्तिज आएंगी जो इस पॉडकास्ट पे और आई हुई हैं, उनके पॉडकास्ट देखें, सबसे कुछ ना कुछ सीखें, और अपनी जो सोसाइटी है जहाँ पर भी आप हो, कुछ ना कुछ बदलाव ले आने की कोशिश करें. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी बिकम मिशन एंड विजन कैरियर्स. हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है किसी से. मैंने भी सीखा, बाकियों ने भी सीखा है, और आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखिए. उम्मीद करते हैं कि आज की शक्ति मिसेस अमित से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप हमेशा हर एपिसोड में हमारे साथ बने रहेंगे नई शक्ति के साथ कुछ नया सीखने के लिए. जुड़े रहिए शक्ति स्पीक्स पे, और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए.